HCG भी बोलते हैं। अब HCG में एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। जो टेस्ट जिसपे बेस्ड होता है वो बीटा HCG होता है, राइट? Now it is produced by the placenta shortly after fertilization and reaches detectable levels in urine and serum about 1 week after implantation attachment, which is implantation is basically the attachment of the embryo to the uterus lining, right? So this is produced by the placenta. HCG जो होता है वो placental hormone होता है। क्लास हो रही है। Now, the levels of HCG continue to rise during the first trimester of pregnancy. So this is why this is an excellent marker for the detection of pregnancy. Okay. Now, what is a quantitative? Like I mentioned, it is a test to detect pregnancy. Now, test can either be a quantitative test or a qualitative test. जो यूरिन टेस्ट हम जो करते हैं, जिसको हम होम पीटी बोलते हैं, जिसको आप घर पे भी एनी नॉन क्लिनिशियंस और नॉन मेडिकल फील्ड रिलेटेड फीमेल्स कैन आल्सो परफॉर्म द टेस्ट, इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट, जिसमें हम बस येस और नो पता कर सकते हैं कि ईदर इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। अ क्वांटिटेटिव टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट, जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ बीटा HCG भी मालूम कर सकते हैं। लाइक आई आगे जाके विल टेल यू कि जो आपकी लेवल्स ऑफ बीटा HCG हैं, जरूरी नहीं कि वो उसी लेवल पे फॉल करें जो कि आपकी एक नॉर्मल रेंज हो। It could either be very high, it could either be very low, and that could indicate some problems in pregnancy or different variations in pregnancy as well. For example, अगर twin pregnancy है तो obviously 2 placenta होंगे। अगर 2 अलग वाले हैं, there are different types of pregnancies as well, twin pregnancies as well. There could be 1 placenta and 2 fetuses. There could be 2 different placentas and 2 different fetuses, right? तो अगर 2 अलग placenta हैं तो double the amount of beta HCG हो जाएगी, right? So that quantity is basically assessed on a blood test that is done by electrochemoluminescence, ठीक है, जिसको ECL based immunoassays भी बोलते हैं। तो वो जो है वो एक क्लिनिकल लैब में ही परफॉर्म होता है। जो यूरिन टेस्ट है, यू कैन डू इट एट होम एज वेल, ठीक है। A qualitative HCG test gives a simple positive or a negative result to whether the person is pregnant or not, right? Now, what is the objective to for the conduction of a PT? I'm sorry, I'm just using PT. PT is pregnancy test. It's not performance time or something. ठीक है? PT is pregnancy test as of now. Generally, हम pregnancy test ही बोलते हैं, ठीक है? Now, a qualitative detection of human chorionic gonadotropin hormone in urine to aid early pregnancy diagnosis. ठीक है? Now, what is the principle of this practical that we are performing today? The test has 2 lines to indicate result. The test utilizes a combination of antibodies, including monoclonal HCG antibody, to selectively detect elevated levels of HCG. ठीक है? The control line is composed of a goat polyclonal antibody and colloidal goat particles. So there is a control line and there is a test line. जो control line है, that is composed of polyclonal antibodies, but the test line है, it utilizes a combination of antibodies including monoclonal HCG antibody. Sorry. Now, the test contains anti-HCG coated on the membrane of the sample or the strip that we're talking about. Because so it has anti-HCG antibodies. Now, the first morning urine is preferred since it generally contains the highest concentration of beta HCG. However, urine collected at any time of the day can be used. ठीक है, preferably आपका जो है first urine sample in the morning is preferred, but you can use it. You can use urine that is collected at any time of the day, right? Now, the pregnancy test can be done either in urine or in blood. Both tests detect the presence of the hormone called human chorionic gonadotropins. What are the materials required? You need test strips, obviously, a specimen container for the collection of urine, and a timer. ठीक है?
Now, what is the procedure? So you immerse the test strip vertically down. There's a maximum line on the test strip, ठीक है? उससे आगे नहीं जाना चाहिए urine. So you pass it for at least you dip the strip in the specimen container for at least 10 to 15 seconds, and then you place it horizontally on a flat surface and you wait for at least 3 to 4 minutes. ठीक है? Basic जो home test kits जो होती हैं वो more than 10 minutes you do not use it for more than 10 minutes. ठीक है? Within 3 minutes आपको result जो desired result है वो आपको मिल जाता है, and after 10 minutes उसका वो result जो है वो काम में नहीं रहता. So it's basically your test is void. ठीक है? Now see, that's the line I was talking about. There's a control line and there's a test line. ठीक है? Control line होती है already on the pregnancy strip home kits. ठीक है? And you see the mark line, that is the maximum that you have to dip the stick in the container. उसके बाद you don't have to, वो जो membrane जो बनी हुई होती है ना, वो खुद ही urine जो है वो उसपे it travels down, it travels up, sorry, and then if there are beta HCG, there is beta HCG in the urine sample, तो वो आपके वहाँ के antibodies के साथ react करेगा जो already present होती हैं on the membrane of this test strip, और वो फिर एक line show कर देगा. ठीक है? If it doesn't show a line, it is a negative test. The woman is not pregnant. If it is a very hazy line, बहुत हल्की सी line है, that also means it's pregnant. But वो आप, if you repeat the test, it's up to you. ठीक है? और अगर सिर्फ एक लाइन शो हो रही है, be it test line or the control line, ठीक है? control line शो नहीं हो रही, so that's a invalid test result. Again, this is the same thing. A negative is only one pink colored band appears in the control region. ठीक है? Test line show नहीं हुई. Distinctive positive में क्या होगा? Distinctive color band appears at the control and test line regions, and the band is equal to or darker than the control band. ठीक है? Either it's equal or darker, और थोड़ा सा अगर एक line भी हल्की सी भी line show हो जाती है, so we consider that as a positive test result. Invalid is no visible band at control region. Repeat with a new test device. ठीक है? Okay. So we've already mentioned what are the interpretations of the results. Positive में हमेशा दो distinct lines appear होंगी on the control line and the test line. And then the negative is only there is one color line that appears in the control line. ठीक है? Test line पे कोई नहीं show हुई. Invalid is there is no line appeared in the control region. ठीक है? Now this is the procedure we have already mentioned. Remove the strip testing device from the foil pouch. Immerse the strip into the urine with the arrow end pointing downwards towards the specimen, and do not immerse past the maximum line. There is a maximum line over there. वो आप उसको 10 to 15 seconds you dip it. Take the strip out after a minimum of 10 seconds and lay the strip face on a flat surface, flat dry surface. ठीक है? You read the test results within 3 minutes, not 10 minutes, within 3 minutes. ठीक है? Ensure that the background is white and it says do not interpret results. Sorry. Okay. So it says do not interpret after 30 minutes. No, this is wrong. You have to interpret it within 3 minutes, after 3 minutes and 10 minutes के बाद वो negate हो जाता है. It's null and void. So you have to repeat the test again. ठीक है जी. Now what are the limitations? So this is the qualitative test and quantitative. Sorry, it's not qualitative. It says quantitative. ठीक है? This is the qualitative test. So the exact concentration and rate of increase in HCG cannot be determined. What does this mean? कि या तो yes or no में, quality is just yes and no. Quantity आपको नहीं पता चल रही कि आपकी जो the placenta is making HCG to the correct corresponding gestational age of the fetus, या वो कम बना रहा है या बहुत ज्यादा बना रहा है, वो आपको नहीं पता चल सकता. आपको बस ये पता चलेगा कि the female is pregnant or not. That is it. Very dilute urine specimen by low specific gravity may not contain representative values of HCG.
false positive results in case of other pregnancy related diseases, जिसमें trophoblastic diseases आ जाती हैं, molar pregnancies आ जाते हैं, testicular tumors आ जाते हैं. So see, beta HCG is not only related to females. जो testicular tumors होते हैं in males, they also produce beta HCG, जो कि आपका positive beta HCG होगा. So in males also, if you do a blood test on beta HCG, if a person has testicular tumor, उसमें भी वो positive आएगा. ठीक है? Now, false negative results may occur in case the level of beta HCG are below sensitivity levels, which is 25 MI milli international units per milliliter. When pregnancy is still suspected, repeat the test after 48 hours. Okay? Now, what are the advantages of a blood test over a urine test? Now, see, it can detect pregnancy earlier than the urine test, okay, at about 3 to 10 days from possible conception. It can measure the exact concentration of the HCG hormone in your blood as well. Disadvantages, like I said, lab nahi hoga. It is obviously slightly expensive than the urine test that is conducted at home, and the result takes at least 7 to 8 hours. मतलब वो सुबह अगर आप देंगे तो शाम में या नेक्स्ट मॉर्निंग आपको रिजल्ट मिलेगा. It's not like a 3-minute procedure that happens with the home test. ठीक है? And it's more accurate. It detects pregnancy earlier than the urine test. ठीक है? Urine test, like I mentioned, after 1 week of implantation तब जाके पॉजिटिव शो करता है, उससे पहले पॉजिटिव शो नहीं करेगा. बट आपका जो ब्लड टेस्ट है वो at about 3 to 10 days after conception ही वो आपको पॉजिटिव शो कर देगा. ठीक है? Beta HCG can be detected 7 to 10 days after conception. Now, what is the rise? See, till 12 weeks of gestational age, उसकी वो वैल्यू बढ़ती ही रहती है. It doubles every week. ठीक है? So बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद it starts declining. So this is what it says here, is to rise very rapidly, frequently exceeding 100 milli international units by the first missed menstrual period. That is the last menstrual period से अब तक की जो वैल्यू होगी, and peaking to about 1 to 2 lakhs at around 10 to 12 जो कि उसका बिल्कुल पीक पीरियड होता है, उसके बाद it starts declining. ठीक है? और अगर 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स भी अगर यूरिन में है बीटा HCG, तब भी वो टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा. मेंस्ट्रुअल फीमेल्स में, मेन नहीं है, उसमें लेस देन 5 होता है. नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में लेस देन 5.0 होता है और HCG डबल्स एवरी 2 days until the 10th week or the 12th week of gestation. ठीक है? It doubles every day basically. Now, HCG is a glycoprotein with a molecular weight about 36,000 daltons. The HCG, like I said, is produced by the placental trophoblastic cells, and it is made up of 2 units, subunits, alpha and beta. जो alpha HCG होता है ना, वो आपको cytotroph से आता है, and it structurally resembles your FSH, LH and your TSH. ये सब एक ही एक family से belong करते हैं. ठीक है? HCG, alpha HCG, FSH, LH and TSH, they all belong to the same structural family. ठीक है? जो बीटा HCG है वो हमारा सिंक साइटोट्रोफोब्लास्ट से होता है, एंड दिस इज द मार्कर दैट वी डिटेक्ट फॉर अ पर्सन टू बी प्रेग्नेंट और नॉट. ठीक है? इसमें आप देख सकते हो कि एक देयर इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड देयर इज सिंक साइटोट्रोफोब्लास्ट. जो आपका बीटा HCG है वो सिंक साइटोट्रोफोब्लास्ट से आता है, और जो आपका अल्फा HCG है वो दैट कम्स फ्रॉम योर साइटोट्रोफोब्लास्ट. All right, and both of them come from the trophoblastic cells that are from the placenta. Now, what are the functions of HCG? It rescues and maintains the corpus luteum till the 6 to 8 weeks of pregnancy. That's why it keeps increasing. It doubles every day, and then till the 10 to 12 weeks of pregnancy. So till then, उसने अच्छा खासा corpus luteum को एक maintenance, एक structure, एक support दी हुई होती है. It also is a stimulus for the secretion of progesterone with the corpus luteum. It stimulates Leydig cells of the male fetus to produce testosterone. See, this is important because आपकी जो testicular tumors होते हैं उसमें Leydig cells होते हैं.
So it stimulates, the beta HCG stimulates the latex to produce more testosterone. ठीक है, इसलिए टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में आपको बीटा एसीजी के लेवल्स इंक्रीज मिलेंगे. It also inhibits the maternal process of immunorejection of the fetus as the homograft. मतलब fetus को वो एक एक्सटर्नल बीइंग से वो उसको रिजेक्शन से बचाता है बेसिकली. ठीक है. It stimulates both adrenal and placental steroidogenesis, and it stimulates maternal thyroid because it is thyrotrophic activity. ठीक है जी. Now reference levels देख लो जल्दी से कि since the last menstrual period, आपका अगर थर्ड वीक होगा, दिस इज अ ब्लड टेस्ट. ये सब ब्लड टेस्ट में पता चल सकते हैं, ये यूरिन टेस्ट में पता नहीं चल सकते. ठीक है. सो यू रिक्वायर अ लैब टेस्ट टू डू ऑल दिस. ठीक है. अच्छा, 3 वीक्स में 5 to 50 होता है, एंड देन यू कैन सी एवरी वीक कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. 6 वीक्स पे देख लो 1000 से 56,000 तक. 12 वीक्स पे आपका 3 लाख तक, सॉरी 288,000 तक जा रहा है. उसके बाद 12 वीक के बाद इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. ठीक है. सो टिल 9 to 12 या 10 to 12 वीक्स तक वो उसकी पीक होती है. आई शो यू अ ग्राफ आल्सो. ठीक है, लेट्स सी हियर. सी एवरी वीक इट्स डबलिंग. अब ये 12 वीक पे जाके उसके बाद ये कम होने लग जाएगा. ठीक है. Now, what are the increases and decreases? ठीक है. What levels can increase beta HCG and what factors can decrease beta HCG? अब increase जो आपका होगा, आपका multiple fetuses like I said, twins हैं, triplets हैं, quadruplets हैं, ये सब में आपके increase होता रहेगा. ठीक है. molar pregnancy जो आपकी होती हैं, उसमें जो snowstorm appearance होता है, that has the levels of HCG does not correspond to the gestational age. Like I'll show you here. अगर for example a female has a molar pregnancy, उसके 5 weeks में 18 to 8,000 नहीं होगा, उसके 5 weeks में ना lakhs में जा रहा होगा number. It will increase so much so. So then you can detect a molar pregnancy on that basis as well. ठीक है. कोरियोकार्सिनोमास जो आपके प्लेसेंटल कार्सिनोमास होते हैं, उसमें भी आपका एसीजी लेवल जो है दे आर वेरी हाई. जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरीज, ओवेरियन ट्यूमर्स जो होते हैं, और टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जो होते हैं, लाइक आई मेंशन, उसमें भी आपका एसीजी लेवल्स जो है वो इंक्रीज हुए होते हैं. Now HCG may also be produced in primary liver cell carcinomas. ठीक है. जो hepatocellular carcinomas होते हैं प्राइमरी, उसमें हमारा अल्फा फेटोप्रोटीन एंड एचसीजी लेवल्स भी इंक्रीज हुए होते हैं. ठीक है. There's certain, not all hepatocellular carcinomas have increased HCG. Certain primary ones have, and then there are medications as well that can increase beta HCG. ठीक है जी. अच्छा, डिक्रीज में आ जाओ तो डिक्रीज लेवल्स कहाँ पे होंगे? इन एन अर्ली प्रेगनेंसी. अगर a patient has just missed, a person has just missed her menstrual date, और फिर वो फौरन ही अगर एक यूरिन टेस्ट अपना ले लेती है तो the levels can blood test, sorry, not the urine test, the levels will be decreased. ठीक है. Ectopic pregnancy,